Okay, good morning, all of you. Hello. Online students, kindly give an audio check whether audio is perfectly fine. The camera is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So let's start with the today's session. Today will be the last and the final lecture for the subject of foundation of signal processing. In this topic, as you all aware, we're going to start with linear filtering. So what do you understand with the term linear filtering, and what does the word filter or linear filter implicates? As of now, whatever signals that we have seen so far that were purely discrete in nature, that means you used to say like x of n equal to 1, comma 2, comma 3, comma 4, and so on. Right? Now, for example, there is a person who is being hospitalized who is being hospitalized, and I want to procure the ECG of that person. जब तक वो आदमी हॉस्पिटल में रहेगा तब तक उसका ईसीजी चालू रहेगा. So can I say that ECG signal that will be procured to the entire hospitalization process will be a very huge data. और अभी ये जो सिस्टम है जो ईसीजी निकालने वाला है, ये सिस्टम का अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, what is the meaning of transfer function? We provide an impulse input. Why do we provide an impulse input? Because impulse input gives us the natural response of the system. Fine. So when you provide an impulse response, when you provide an impulse input, you get the impulse response, you get a natural response system. And that is the basic meaning of the term convolution. तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब वही होता है कि जहाँ पे आप एक इम्पल्स इनपुट प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, और वो सिस्टम जो उसका आपको इम्पल्स रिस्पांस देता है, जिसको आप कहते हो नेचुरल रिस्पांस और द सिस्टम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. नाउ क्वेश्चन टू अराइज कि आपने डिस्कस किया अभी ईसीजी के बारे में. ईसीजी एक ऐसा सिग्नल है जो कि इट इज नेवर एंडिंग. You have to wait for a long amount of time so that the entire signal is available. कब तक वेट करूं मैं? पेशेंट के अच्छे होने तक या पेशेंट के मरने तक? That means an engineer from SPIT will be sitting in the hospital, Kokila Ben, या फिर take the example of Tata Member, whatever hospital it is. वो तब तक वेट करता रहेगा जब तक पेशेंट मरता नहीं या जब तक पेशेंट अच्छा नहीं होता. So do you think am I supposed to wait for such a long time? Example number 2. Like I am talking to you, the audio signal, the speech signal that is being generated using my vocal cord, it will be continuous in nature. You need to wait unless my speech gets over, or unless the clock strikes 10 a.m. in the watch. Are you still supposed to wait for such a long time कि मैं तब तक वेट करते रहूंगा, तब तक फिर मेरे पास एक पूरा सिग्नल अवेलेबल होगा, फिर मैं उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लूंगा मैं? बिकॉज सिग्नल को कॉन्वोल्यूशन अगर आपको लेना है, अगर आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस निकालना है, तो आपके पास में पूरा इनपुट, आपके पास में पूरा वो रिस्पांस अवेलेबल होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको मैं कहता हूँ, यू फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ 1, 2, 3, 4. तो L equal to 4 signal is available to you. What will be the value of L for ECG signal? What will be the value of L for an audio signal? What is the value of the L for the noise coming from the AC compressor? Can I say L equal to infinity in that case? The question to arise, how to find the convolution of a real-time signal. Question to arise, how to find the convolution of a never-ending signal. How to find the convolution of a signal having length equal to infinity. For that reason, we need to filter linearly, hence the name as linear filter. Understood? Now, let's come to the wordings. I'll share the screen with you so things become more easy for your understanding what we're trying to discuss on this prospect. Just have the meaning of this, right? So as you can see here, that we have linear FR filtering using overlap save and overlap add method. There are basically two methods are there. One is overlap save and another is overlap add. Now question to arise, what is the meaning of overlap save method? For example, I can see in the camera I am having 4 fingers.
1, 2, 3, 4. And each finger corresponds to 1 KB. So what is the size of the data? 4 KB, right? 4 KB size of the data. Now, this is the image file, for example. एक मैंने image मैंने capture किया using the camera, DSLR कैमरा मैंने यूज किया, high resolution वाला कैमरा है, और ये कैमरा से मैंने फोटो जो मैंने कैप्चर किया, तो ये फोटो का साइज है 4 KB. अभी ये फोटो जो मैंने फाइल जो मैंने कैप्चर किया JPG फाइल, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ यूजिंग WhatsApp. You might be aware of whenever I send an image file using WhatsApp, the image compress. और कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी जो पिक्सेल्स होते हैं उनके साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट किया जाता है. तो मैं क्या करने वाला यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पे 4 था, तो मैंने क्या किया, मैंने काम करता हूँ कि ये पिक्सल है, उसके बाजू वाले जो पिक्सेल्स को मैं ड्रॉप करता हूँ, डिस्कार्ड. ये जो पिक्सेल्स को मैं ड्रॉप करता हूँ, हाउ मेनी फिंगर्स आर रिमेनिंग? How many fingers are remaining? 2. So can I say when I discard 2 fingers, I save the size of 2 KB? I hope the statement is pretty clear to you. When I discard 2 fingers, I am saving a size of 2 KB. If I discard 3 fingers, I am saving a size of 3 KB. खत्म. समझा आपको यहाँ पे? Hence, sometimes overlap save method is also known as overlap discard method. When you're discarding something, that means you're saving something. Or other way around, when you're saving something, you have to discard something. That's the meaning overlap save, overlap discard. Now just try to read the lines. Real-time signals are long, as we have seen ECG signal, speech signal, audio signal, image, video, fine. Image can't be taken as a real time because the image has a confinement. The image का size है. The image does not come under the ambit of real time signal. But yes, video, the series of images, video signal, speech signal, audio signal, ECG, EKG, EEG, EMG, biomedical signal, seismic waves, these all are the example of real-time signal. They are very long, they are unending, L equal to infinity. And as an engineer, we cannot wait till the entire signal is available. So convolution has to be required to perform online. सिग्नल आया, कन्वोल्यूशन निकाला, सिग्नल आया, कन्वोल्यूशन निकाला, सिग्नल आया, कन्वोल्यूशन निकाला. मुझे ये काम करने वाला है यहाँ पर. मैं I'm not going to wait until unless the entire signal available. पूरा सिग्नल वेट नहीं करूंगा. मैं क्या करूँ, मैं पूरे सिग्नल को चंक्स में डिवाइड करूंगा. मैं पूरे सिग्नल को मैं ब्लॉक में डिवाइड करूंगा. ब्लॉक 1 आया कन्वोल्यूशन, ब्लॉक 2 आया कन्वोल्यूशन, ब्लॉक 3 आया कन्वोल्यूशन, so on. This is how I'm going to perform. So here there are 2 approaches. Overlap approaches करने वाले हम लोग. Overlap save, also known as overlap discard, and another method is overlap add method. Linear convolution is performed using circular convolution. Any intelligent student over here, can you help me? What is the meaning of linear convolution and circular convolution? What is the length formula for the same? Length formula for linear, length formula for circular. Fast. Length formula for circular. Quickly. Length formula for linear, length formula for circular. Fast. Online students, quickly. Linear convolution. What is the formula? Length formula. Yes. बोलिए. Length formula. L is equal to L1 plus L2 minus 1. Yeah, this is the formula for linear convolution. Come on, guys, fast. Now, what about circular convolution? What is the formula for circular convolution? Quickly. L equal to L1 equal to L2. Yes. So I need to perform linear convolution only, but I'll be performing by means of procedure given by circular convolution. Okay, I hope you have understood the entire insights of the linear filtering. Now, as I told you that the entire signal is going to be very long in size, I'll be dividing the entire signal into small chunks. So that chunk we call it as block. Kindly make a note of that. We'll be calling it as a block. Now the question to arise: what should be the size of the block? Like example, if I have 1, 2, 3, 4, 5, and a very long data is there. So what should be the size of the block? Should I take like 1, 2, 3, 4, so on, or should I take like second example? Should I take like 1, 2, 3, 4, 5, 6? कैसे लेना है मुझे? तो वो चंक में मुझे क्या लेना है मुझे? ठीक है.
दो डेटा लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, कैसे, हाउ टू डिसाइड? That is the question in front of us, how to decide the block size. The formula is very simple. L is equal to L1 plus L2 minus 1. L equal to L1 plus L2 minus 1. Now L replaced by N, L1 replaced by L, L2 replaced by M minus 1 as it is. Now what is the meaning of this N, L, M? N is the block size, L is the length of X of N, and M is the length of H of N. Okay, सिंपल है सर. अगर आपको ABCD याद होगा तो L के बाद में M आता है, फाइन. तो L M, L के लिए X है, M वाला H है, सिंपल रिमेंबर, फाइन. L के लिए X और M के लिए H. ओके, सिंपल, यू कैन रिमेंबर दैट वे कि A B C D, L के बाद में M आने वाले consecutive in the 26 alphabets. This is how we are written in case of L plus M minus 1. Now let's start with the very first question. Question आपका ऐसा आने वाले, perform linear convolution using overlap save method, also known as overlap discard method. अगर कोई सेव करा है तो कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फाइन. सेकंड मेथड कौन सा है? ओवरलैप ऐड मेथड. नाउ ये ऐसा लिखा जाता है OSM and OAM. You should remember the acronym as well. It is OSM and OAM. OSM का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of OSM? Overlap save method. What is the meaning of OAM? Overlap add method. Very good. Now how to perform them? Now we can see here that now we are having X of N as 3, 4, 1, 2 and H of N as 1, 2, 1. Understood what I'm trying to say? Now pay attention. Sir, ये सेम क्वेश्चन X of N, H of N वाला आप कर सकते हो यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर कॉन्वोल्यूशन. कैसे? अपना शॉर्टकट मेथड 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1 3 जा 1 4 जा, फाइन. एंड ये मेथड करने के बाद में आपको यहाँ पे आंसर कितने टर्म्स में आने वाला है? कैन यू व्हाट विल बी द आंसर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द आंसर. कितना आंसर आएगा एलिमेंट्स से? नंबर ऑफ आंसर 4 6 plus 3 7 minus 1 6. Yes, very good sir. ये आपने सही बोला कि the final elements in the answer will be L equal to 6 because ये हो जाएगा हमारा H of N, ये होता है X of N और ये भाई साहब हो जाएगा Y of N and Y of N will be equal to L equal to 6 as per the formula L1 plus L2 minus 1. आप ऐसा कर सकते हो और आपको यह आंसर आने वाला है, फाइन. I want to do one thing. I want you to tell me the final answer for this. Fast. You may use this tabular method. In exam, you have to use formula method. In exam, you have to use formula method. But for sake of understanding, for sake of simplicity in your GATE paper during your interview, aptitude, you may use the tabular method. Tell me the final answer quickly. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. You have to perform simple basic linear convolution using tabular method. L equal to 6. क्या आंसर आया? What is the answer you're getting, sir? Can you put it louder, beta? 3, 10, 12, 8, 5, 5, 2. Okay. Fine. I hope you all have got this answer. 3, 10, 12, 8, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. This is the answer I will be getting if I try to solve them using the method of basically the convolution using tabular method. सर अभी तो आपने बोला लीनियर कॉन्वोल्यूशन जो है वो ऐसे होता है, ठीक है, फाइन. बट वी आर लर्निंग लीनियर फिल्टरिंग. लीनियर फिल्टरिंग कब यूज होता है? जब x of n बहुत बड़ा होता है. यस, यू आर वेरी मच करेक्ट. x of n अगर बहुत बड़ा होता है, नेवर एंडिंग इनफाइनाइट लेंथ का अगर है आपके पास में x of n, तभी हम लीनियर फिल्टरिंग की तरफ हम बढ़ने वाले हैं. एग्जाम में आपको इनफाइनाइट लेंथ वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है. एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, समझा आपको? लेकिन वो क्या बोलेंगे? परफॉर्म यूजिंग OSM OM टाइप 1
और टाइप 2 परफॉर्म लीनियर फिल्टरिंग। समझा आपको क्या कहा मैंने? आप OSM यूज करिए या फिर OAM यूज करिए या फिर ये मेथड यूज करिए जो अभी आप लोगों ने यूज किया, यू विल गेट सेम आंसर। The only idea of the syllabus is that students should be well aware what is the meaning of linear filtering, number one, what is OAM and OSM method, बस that's it। आपको एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हो कि एक्सऑफिन बहुत लंबा देके रखा है आप कन्वल्यूशन निकालते बैठ जाओगे आप, बिकॉज अगर आपने ब्लॉक साइज डिसाइड किया 2 का एग्जाम्पल, तो क्या ब्लॉक साइज होगा? 2 का डिसाइड ब्लॉक साइज आपने 3 4 लिया, 1 2 लिया, कितना कन्वर्शन करना है अभी आपको? ओनली 2। एक बार आप करें 3 4 के साथ, सेकंड किसका लोकेशन करोगे आप? 1 2 के साथ में। तो खुद ही सोचिए, अगर आपको मैं कहता हूं 3 4 1 2 5 9 3 4 1 9 0 4, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर आपने n इक्वल टू 2 बोला तो कितना सारा कन्वर्शन करना पड़ेगा आपको। 3 घंटा will be like not enough for you, not enough for you. That is the only reason what they mentioned, you will be keeping x of n very small so that student will perform hardly 2 or maximum 3 convolution. Understood the entire story? Fine. So let's start with the algorithm, how to compute with this. Now, we select block size n equal to 4. We select block size n equal to 4. Here the length of h of n m equal to 3. किधर है भाई? n किधर है? उसने बोला मैं n को 4 सेलेक्ट करता हूं। Assumption. We select n equal to 4. Here length of h of n m equal to 3. कहां से आया 3? h of n कितना है? h of n है 3, बराबर। ये था 4, तो बोलता है कि मैं m को 3 बोलता हूं, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, और मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा n है 4। अभी सर एक काम करिए, आपके पास में n 4 है, m 3 है, so you put this in the formula over here, n equal to 4, m equal to 3, what will be the value of L? What will be the value of L? If n is 4, m is 3, what will be the value of L if I substitute the formula over here? Yes, L equal to 2. Since I'm using a linear formula, why it is known as linear? Because it is not involving any square or cube terms. Hence known as linear convolution, linear for filtering. Okay, so now you can see here that now n is the block length, L is the actual data of x of n, m is the data of x of n, L equal to 2. L equal to 2 यहाँ पे आ गया. Okay sir, very good. Now pay attention. Method number 1. कौन सा करें अभी हम लोग? Overlap save method, also known as overlap discard method. पहला मेथड यहाँ पे शुरुआत हो जाता है. We divide x of n into multiple overlapping blocks. x of n किधर है भाई? x of n ये 3 4 1 2. इसको हम डिवाइड करेंगे into multiple overlapping blocks. Since there is no overlapping for the first block, we perform zero padding. मतलब क्या किया इसने? ये देखिए 3 4 1 2, इसने कुछ जीरो यहाँ पे लगा दिया पहले, कुछ जीरो इसने बाद में लगा दिया, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैंने ब्लॉक डिसाइड किया, क्या सर? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हो गया, नंबर 1। सेकेंड चांस 3 4 1 2 हो गया। समझ रहे सर क्या चल रहा है? थर्ड चांस, पे अटेंशन, ये देखिए ये थर्ड वाला है। जीरो जीरो 3 4 हो गया, 3 4 1 2 एंड लास्ट विल बी 1 2 0 0 0 0 3 4 3 4 1 2 1 2 0 0। ओके फाइन, चलो नाउ पे अटेंशन, सी पे यहाँ पे क्या किया है? 0 0 3 4 3 4 1 2 1 2 double 0। Now we perform linear convolution using circular convolution. What is h of n? What is h of n, sir? 1 to 1. What is size of x of n? 4 4 4. I require one more 0, 0 padding. h of n हो जाएगा 1 2 1 0। फाइन, क्या होगा आपका h of n? 1 2 1 0।
Now you have, sir, what you have 0 0 3 4 and 1 2 1. Now pay attention. यहाँ से मेरे इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू होने वाले. Just pay attention over here. अभी अपना काम इजी हो गया. Now सबका ध्यान स्क्रीन पर. x1 of n समझा कैसे आया, x2 of n समझा कैसे आया, x3 of n समझा कैसे आया. Those who have understood, raise your hands. How you have got x1 of n, x2 of n and x3 of n. Once again, हमारे पास में जो x of n था वो क्या था, 3 4 1 2 था. ठीक है, हमने 2 0 यहाँ पे अपेंड किया, 2 0 यहाँ पे हमने लगा दिया और हमने बोला देखो भाई अब मैं बनाने वाला हूँ x1 of n is this, okay, x2 of n is this and x3 of n will be this. Right? Sir, what if n is equal to 2? Yes, yes. What if n is equal to 2? एक मिनट बेटा, पहले ये बाद में डिस्कस करते हैं. मुझे just give me a moment बेटा. We'll discuss on that. Okay. Now this is x1 of n, x2 of n and x3 of n. Okay. अभी मेरे पास में है ये x1, ये x2, ये x3. So now I'll be performing 3 convolution. H of n with x1, h of n with x2, h of n with x3. Understood? Once again, h of n with x1, h of n with x2, h of n with x3. What is size of x1 of n? 4. Size of x2 of n? 4. Size of x3 of n? 4. What is size of h of n? 3. 1 2 1. I need to put one more 0. 1 2 1 0. Perform using circular convolution procedure. कौन है हीरो, कौन है जीरो? फास्ट. कौन है हीरो, कौन है जीरो? I want to perform x1 of n and h of n. हीरो कौन है, जीरो कौन है? यस, ये है आपका जीरो और ये है आपका हीरो, बिकॉज इसमें केवल एक ही जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है. तो चक्री में घुमा दीजिए, मुझे बोलिए क्या आंसर आया आपका x1 और h1 का. Tell me what answer you get for x1 and h1. x1 convolved with h1 h of n using the procedure of circular convolution. What answer you will get? आप घुमाओगे x को चक्री में, आपका h घूमेगा चक्री में और x रहेगा सीधा सीधा. चेक करिए. 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 1. आपने h of n को चक्री में घुमाया, x1n जिसको आपने 0 बोला उसको आपने सीधा सीधा लिखा और आपका आंसर आया 11 4 3 10. Fine, online students, I hope you all agree to this. The answer will be 11 4 3 10. Now this will be called as y1 of n. Why we call it y1 of n? y1 of n. सुनिए, अभी क्या करना है हम लोगों को. अगर अभी आपको ये समझ गया है कि भाई ये तीनों कैसा आया, अभी इसको कन्वर्ट करने का h के साथ में आंसर बोलिए y1 of n. फिर आप करिए x2 of n को h के साथ में इसको बोलिए y2 of n. Similarly, last chance you perform x3 with h and tell me this is known as y3 of n. y1 of n is over. क्या आंसर आया आपका? y1 का आंसर क्या आया? 11 4. क्या आंसर आया y1 का? यस, आरती, मोहसिन, जीत. 11 4 3 10. तो आपका आंसर आया y1 का 11 4 3 10. Now you just have a look at x2. Just have a look at x2 and h of n. कौन हीरो कौन जीरो? h of n 0 और x2 of n हीरो. फाइन. तो जो हीरो है उसको चक्री में घुमाने का और जो h of n इसको अभी सीधा सीधा लिखने का. लास्ट चांस. x3 और h, x3 और h, कौन हीरो कौन जीरो? x3 0 और h of n हीरो. तभी आपके पास में होगा y1, y2 and y3.
Tell me the answer that you have procured for y1, y2, y3 after performing linear using circular for this procedure. y1 आपका आ गया है 11, 4, 3 and 10, right? Same way, tell me what is y2 and what is y3. Prathamesh, are you there, beta? Prathamesh boy, you have raised your hand. Any doubt? So now you have got the answer of y1 of n, y2 of n and y3 of n. Divide amongst yourself to get the answer for y2 and y3. One person perform for y2, another person perform for y3. क्या आंसर है बेटा आरती y2 का? जीत आंसर फॉर y3. डिवाइडर का काम करिए फटाफट. एक दिन को y2 करने को, दूसरे को y3 करने को लो. आया y3? y3 is 1 2 0 0 1 2 1 0. x3 बनेगा आपका 0, h of n बनेगा 0. x3 will be 0, h of n will be 0. One two 0 0 1 2 1 0. Yes. Kindly check. Online students, is the answer matching? Is this your y1 of n? If you got, raise your hands. Is this your y1 of n? If yes, then raise your hands. Is this your y2 of n? Kindly check. Raise your hands. 8, 12, 12, 8. Is it correct? 8, 12, 12, 8. y2. Is your y3 same? 1, 4, 5, 2. 1, 4, 5, 2. Is it same? Yes. Very good. Now, Aarti, can you tell me the answer? What answer you have got? क्या आंसर आया था अपना? 3, 10. फाइनल आंसर जो आपने किया था यूजिंग टाइपलर मेथड. 3, 10. यस 3, 10, 12, 8, 5, 2. आपका ये आंसर आया था. करेक्ट है. नाउ पे अटेंशन. सर आपने बोला मुझे 3, 10, 12, 8, 5, 2. अब इसको मैं कैसे करने वाला? जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ यू कैन सी दैट आई हैव 11, 4, 3, 10, 8, 12, 12, 8 एंड 1, 4. मोस्टली यहाँ पे देखो बेटा, अब पूरा गेम इधर होने वाला है. ये अपने को आया y1, फाइन. ये आया अपने को y2 और ये अपना y3. अपने को आंसर क्या आना चाहिए? 3, 10, 12, 8, 5, 2. कैसे आएगा? पहले लिखने का 11, 4, 3, 10. उसके नीचे लिखने का 2 ब्लॉक छोड़कर, क्योंकि आपने 2 डिसाइड किया था. 8, 12, 12, 8. फिर 2 छोड़कर बोलने का 1, 4, 5, 2. Which method, sir? Overlap, save. For save you have to discard. For save you have to discard. So I'll be discarding what? The not overlapping. This is not overlapping. I'll be discarding this. क्या बचा? 3, 10, 12, 8, 5, 2. Done. Understand the process? So here you have to drop the signals, drop the data and take 3, 10, 12, 5, 2 as the answer. You have to discard. Perform linear convolution using circular convolution process. So you have x1,
x2 x3 x1 को परफॉर्म किया h के साथ में, x2 को परफॉर्म किया h के साथ में, x3 को परफॉर्म किया h के साथ में, जो तीनों आपको y1 y2 y3 आया तो ये फॉर्म में लिखा और डिस्कार्ड करते गए और फिर हमने बोला 3 10 12 8 5 2 and that matches with the answer that you will be getting by using tabular method. Have you understood or not? ये देखिए करेक्ट है. क्रॉस वेरिफिकेशन, आरती जी क्रॉस वेरिफिकेशन, सेम आंसर. तो इसको क्या बोला जाता है? खुदे पहाड़ निकला चूहा, है ना. खुदे पहाड़ निकला चूहा. कितना बड़ा प्रोसीजर, क्या मिला क्या? वही जो आपका आंसर 2 सेकंड में आया करता था. So exam में you have to perform the entire method, but make sure to spend 2 seconds for cross verification so that you get confidence कि yes the answer is correct. हाँ बोलो शेर. हाँ 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 एक बार करके देखो ना. हाँ यस एक बार करके देखो ना, आंसर मैच होता है क्या? Someone is asking me, sir, if L equal to 1, if L equal to 4, what will happen? Try and check whether you're getting answer correct or not. The ultimate idea, answer should match with the verification answer. Can we go ahead with OAM, overlap add method? Yes, students, can we proceed with overlap add method? Students having any doubt pertaining to n equal to 2, 3, 4 ये रहा तो वो check करिए. Make sure whatever n or l you decide should fetch you same answer that we have got for cross verification. Hence I made that statement. After performing linear convolution वाला sum, which will take around 15 to 20 minutes of yours, kindly invest at more 1 minute extra and perform this method directly over there itself, so that will give you a confidence that yes 10 marks is in my pocket. You are done correctly. With the help of pencil or the margin you can do it कि भाई ये है, चल आंसर मेरा मैच हो गया. Correct. Now let's jump to overlap add method. Overlap add method क्या बोलता है? Pay attention now, Mosin. Overlap add method. आपके पास में था 3, 4, 1, 2. Overlap save method में actually saving नहीं होता है, to be very honest. तो ऐसा मैंने बोला वो सेविंग मेथड सेविंग नहीं होता है ओवरलैप सेव के अंदर, क्योंकि वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे 2 जीरो एक्स्ट्रा डाल देते हो. फाइन, कुछ जीरो आप यहाँ पे लगा देते, फिर आप बोलते हैं हाँ चलो 0 0 3 4 3 4 1 2 1 2 0 0. I can say now I have created 3 blocks. But overlap add मतलब क्या करोगे? आपने बोला L equal to 2, L equal to 2 because N equal to 4, N equal to 4, that is we got L equal to 2. तो आप 3 4 को लीजिए, 1 2 को लीजिए, 0 0 अपेंड कर दीजिए, खत्म हो गया. टिक टिक कर 3 4 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0. Perform linear convolution using circular. Tell me the answer fast. 3 4 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 3 4 0 0 0 1 2 1 0 0. Once again 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0. Perform. Tell me y1 and y2. Tell me y1 and y2. दोनों केस में आपका x हमेशा 0 0 रहेगा. थ्री फोर 0 0 1 2 0 0 3 4 0 0 and 1 2 0 0. y1 of n is in front of you. y1 of n you will get as 3 10 11 4. Check on yourself. One student perform
y1, another student perform y2. Notes are already shared with you. Notes are already shared with you in the WhatsApp group few days back. You can check it out. Just for the sake of verification, for sake of understanding, I wanted to perform x1 with h1 and x2 with h once again. 3 4 1 2. 3 4 लिया 0 0 1 2 0 0 l equal to 2. हाँ yes l equal to 2 because l equal to 2. L equal to 2 इसलिए आपने 3 4 लिया 0 0 डाला 1 2 लिया 0 0 डाल दिया अब फिर आपने परफॉर्म किया x1 x2. So overlap add method का बेनिफिट ये होता है कि that number of blocks created are less compared to overlap save method. It's actually an irony. because overlap save जब करते हैं overlap save क्या भाई चलो saving होगा और यहाँ पे saving नहीं होता यहाँ पे like you have to take more blocks compared to OAM. What answer you got, sir, for y1 and y2? Exactly, y1 is same. Fine. I hope all have got same answer for y1. It is in front of you on the screen. What about y2? y2 आपका आएगा 1 4 5 2. Very good, sir. तो आपको आ गया है 3 10 11 4 and 1 4 5 2. Kindly check both the answers. 3 10 11 4 and 1 4 5 2. y1 is 3 10 11 4 and y2 is 1 4 5 2. Online students, I hope you have got the answer for y1 and y2. दोनों केस में आपका h बनेगा 0 और x बनेगा 0 और आपका आंसर आया रहेगा 3 10 11 4 1 4 5 2. Very good. Now can we start with the procedure? Before we start, sir, before we start, pay attention now. RT answer 3 10 8 5 बराबर ना? अच्छा ओके एक सेकेंड ना 3 10 12 वेरी गुड 8 5 2 ये आंसर आना चाहिए एज पर टेबुलर मेथड. क्या करने का? सबसे पहले अगर आपको याद होगा आपने ऐसे ही किया था, करेक्ट है? फाइन. ओवरलैप सेव में आपने ऐसा लिखा, आपने कट किया. सर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे था 3 10 11 4 1 4 5 2. पहले लिखने का 3 10 11 4 1 4 5 2. फाइन, लिखा आपने, दो का ब्लॉक बना के आपने लिखा. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. इन ओवरलैप सेव यू हैव कट, कैंसिल. यहाँ पे कट नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है. नाम है सर ऐड लिखा गया. ऐड 3 10 11 plus 1 12 4 plus 4 8. मम्मा कुछ नहीं है. ओके नो प्रॉब्लम. 5 plus 2 डन. फाइन 2 डन. 3 10 12 8 5 2. 3 10 12 8 5 2. In overlap add method you actually add, and overlap discard you discard, and discard saves. This is the meaning of overlap add method. If you want, you can again do cross check using our tabular method for verification purpose. Understood or not, sir? Now let's have a look at another question quickly. उसी बात नहीं करिए बेटा. Just have a look at the another question fast. December 15 का क्वेश्चन है ये. This is the December 15 question. December 15 exam question for 10 marks. University question. X of n 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. H of n triple 1 1 1 1.
Perform OSM, OAM. We select block size n equal to 4. Here length of h of n equal to 3, L equal to 2. Same 4 3 2. Previous की तरह 4 3 2. Now ओवरलैप ऐड मेथड पहले किया, पहले कौन सा किया उसने? ओवरलैप ऐड मेथड किया. ऐड मेथड क्या करेगा? 1 2 0 0 3 4 0 0 5 6 0 0 7 8 0 0, and then we have to perform our regular style. चलो fast. Another question quickly. Pay attention. आरती यहाँ पे देखो बेटा. Another question. 2 1 minus 1 2 1 1 and h of n equal to 1 2 3. N is equal to L plus M minus 1. Here the length of h of n, M equal to 3. M equal to 3. Yes, M is 3. ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 ना? 1 2 3 4 5 6. Yes. Now, so h minus 1, M minus 1. M minus 1 is 2. So we select L equal to 2, length of the current sample. L equal to select कर दिया उसने. The block size N will be equal to 4. N 4, L 2, H 2. Sorry, or M 3. 4 2 3. 4 2 3. Understood क्या किया? Any question over here? N is 4, L is 2, and M equal to 3. For overlap save method, you have to append M minus 1 zeros. For overlap save method, you have to append M minus 1 zero. जैसे इसके लिए हमने 2 0 append किया था. 0 0 3 4. Fine. And actual current sample will be L. Fine है? वहाँ पे L equal to 2. So 0 0 3 4. So 0 0 because of M minus 1 and 3 4 because of L equal to 2. Overlap. So where does 2 come क्या from? करते हो? हाँ सचिन बोलो. 2 कहाँ से है? हाँ 2 कहाँ से आया? अपना देखो M कितना था बेटा वहां पे? M 3 था ना? M was 3. So 3 minus 1 2 and L equal to 2. L equal to 2. See, L equal to 2, M and is equal to 2. Are you? नहीं, you have to select. You have to select. क्वेश्चन में इतना दिया जाएगा आपको. क्वेश्चन में आपको इतना दिया जाएगा बस. See, Sachin, I am talking about this example बेटा. आप ये वाला एग्जांपल देखिए आप. ये एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी किया ना, जस्ट पे अटेंशन, एक मिनट पे अटेंशन ओवर हियर. ये एग्जांपल जो हम लोगों ने किया, ये अपना वाला फेवरेट क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. 3 4 1 2 1 2 1. n वैल्यू 4, m वैल्यू 3, l वैल्यू 2. तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग का, वरना भूल जाओगे आप. मैं क्या बोला यहाँ पे? l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 and n equal to 4. याद हो गया? चलो ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप. In case of overlap save method, how many zeros are appended? How many zeros are there beta? In case of overlap save method, 2. ये 2 कहाँ से आया? M minus 1, 3 minus 1. So you have appended M minus 1, मतलब 3 minus 1. M minus 1 zeros you have to append equal to 2. This many zeros you are going to append. Okay. The 3 4 कहाँ से आया? This 3 4 is because of L equal to 2. This 3 4 because of L equal to 2. Now, let's see over here. Overlap add method. Overlap add method में क्या करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं. हम लोग जनरलाइज वाले में क्या किया है. Actual sample L, fine. Add में L 3 4 0 0 1 2 0 0 and zeros M minus 1. वही किया था ना हम लोगों ने. 3 4 0 0 1 3 4 0 0 1 2 0 0. So L equal to 2 sample and M minus 1 zeros you have to suffix. Okay. Now, तो ये क्वेश्चन था अपने पास में. Overlap save, overlap discard, overlap save, overlap discard. Okay. So for overlap save, what we are supposed to do? Overlap save के लिए you have to append M minus 1, 3 minus 1, 2 zeros you have to append. Okay. The 0 0 2 1, then 2 1 minus 1 2, then minus 1 2 1 1, and last will be 1 1 0 0. Check that. Overlap discard, overlap save method. Okay. Now you have to perform clockwise convolution. H of n कितना है? What is h of n? 1 2 3. The 1 2 3 0. Now you have to perform y1 of n, y2 of n,
y3 of n, y4 of n, y1, y2, y3, y4, and then you have to perform discard. Cut. क्या बचा? 2 5 7 3 2 9 5 3. Cross check at the exam. Match. ओवरलैप ऐड मेथड. क्या करने का ऐड के लिए? ऐड के लिए क्या करोगे आप? You have to take L sample and then minus 0. You have to suffix. You have to append at the end. Okay. तो क्या होगा फिर? बोलिए सर. 2 1 0 0 minus 1 2 0 0 1 1 0 0. You can check. 1 2 3 4. 4 था. अब कितना हो रहा है? 3 है ना? 3 ना सर. पहले 4 था सेव में, और डिस्कार्ड में देखो आपको खाली आपका अभी ऐड में केवल 3 बनने वाला है. The add gives you 1 less. OAM will give you 1 less. सेव में आपका 4 बना था, यहाँ पे 3 ही बन रहा है. अगेन परफॉर्म. y1 y2 y3 लिखो, ऐड करो इसको. 8 minus 1 7 3, एक और एक 2, 6 और 3 9. आंसर आ गया. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला. 1 2 3 5 1 1 1. फाइन. सेम क्वेश्चन जो पहले देखा था. दिसंबर 15, क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. जस्ट हियर टू आंसर. सॉल्यूशन इज मोस्टली यहाँ पे देखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1. ओके. सो 0 0 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 0 0. I hope you agree to this. 5 कॉन्वोल्यूशन आने वाला है. y1 y2 y3 y4 y5. आरती वाईफाई दिखा. वाईफाई पासवर्ड वाईफाई का. फाइन. फाइनली वी परफॉर्म ओवरलैप सेव कट 1 3 6 9 12 15 18 21 और 15 8. डन. OAM 5 था तो एक लेस होना चाहिए. 1 2 3 4. यस. 1 2 0 0 3 4 0 0 5 6 0 0 7 8 0 0. y1 y2 y3 y4. Add 3 plus 3 is 6, 7 plus 2 9, 7 5 12, 11 4 15, 7 11 18, 6 15 21, 15 8. Done. Any doubt over here? This completes linear filtering. Any question? Any question over here? Syllabus. Come to syllabus. Pay attention over here. सबका ध्यान यहाँ पर. सबका ध्यान यहाँ पे. ये देखिए सर. Just have a read over here. Just read this. Module number 4. DSP algorithm. Fast circular, fast linear. Done. 4.1. Last lecture. 4.2. Linear FIR filtering using overlap add method and overlap save algorithm and implementation using FFT. Any question over here? अभी क्या ना FFT हम लोगों ने देख. फास्ट लीनियर कॉन्वोल्यूशन एल्गोरिथम. आदिति वाला नोट्स याद है आपको? आदिति वाला नोट्स. लीनियर दैट सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन which we have done. Yes, ये आदिति वाला notes, correct. This was the question that we have done. Find linear convolution using circular, using FFT. Not possible. It will give you, can't be multiplied. तो आपने जीरो पैडिंग किया था. 1 2 3 0 1 0.5 0 इसका FFT निकाला, इसका FFT निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका इनवर्स निकाला था, तो आपको ये आंसर आया था. तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. परफॉर्म एक्स ऑफ एन आपको दिया जाएगा, ऐसा एच ऑफ एन दिया जाएगा, बोला जाएगा फास्ट लीनियर फास्ट ओवरलैप सेव मेथड करिए. फास्ट
तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू यूज दैट सर्कुलर वाला मेथड, ये वाला कॉन्वोल्यूशन वाला मेथड, एफएफटी। Linear FIR filtering using overlap add, overlap save and implementation using FFT. तो जो वहां पे कॉन्वोल्यूशन था सर्कुलर को करना पड़ेगा यूजिंग एफएफटी, सिंपल सेंस। 7 पॉइंट का ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन अगर मैं कहता हूं परफॉर्म डीएफटी ऑफ 3,4, एग्जांपल है, डोंट वरी, 3,4 कैसे करोगे डीएफटी 3,4 का? तो सर सिंपल है, उसमें क्या है, यू परफॉर्म 1 1 1 -1 बाबूजी लिखने का ऐसा और बोलने का सर ये हो गया 3 4 एंड देन से 7 एंड -1 ऐड एंड सबट्रैक्ट। यस, नंबर 1 स्टाइल। नंबर 2, yes, 3 plus 4 7, 3 minus 4 answer will be -1, second style. Third style, do you remember this? थर्ड स्टाइल 1 2 3। सर ये तो समझ गया, लेकिन सर क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है कि अगर समझो आप मुझे बोलते, एक मिनट है बेटा, ये था एन के ना, 2 पाई एन के। अब क्वेश्चन ये आता है कि समझो अगर आप बोलते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द आंसर फॉर 3 4 1, तो मैं क्या करूं? हाउ टू डू दिस? Yes, how to do this? Should I go with first method, DFT? Should I go with second method, FFT? Should I go with third method, formula method? कौन सा करने का? I'll go with third method only. Don't ever think कि सर 3 4 1 है तो 3 4 1 0 कर देता हूं तो 4 पॉइंट बन जाएगा, फिर मैं एफएफटी यूज करूंगा। नॉट पॉसिबल सर। 3 4 विल गिव यू 2 पॉइंट सीक्वेंस, 3 पॉइंट विल गिव यू 3 पॉइंट सीक्वेंस। अगर आप 3 पॉइंट का अपने और 0 लगा, जब का एफएफटी 4 पॉइंट का आएगा, आपका आंसर गलत होगा। So whenever a non-standard question is asked, you have to simply use the formula. और सर सिंपल है, ये फॉर्मूला को यूज करके ही तो ये बनाना बाबूजी, ये बाबूजी को यूज करके तो आपने एसएफजी बनाया था। अगर बोलते नहीं एफएफटी से ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 पॉइंट का फॉर्मूला मेथड यूज करके बाबूजी निकाल के बाबूजी से आपको ये एफएफटी बटरफ्लाई बनाकर आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में अगर आता है तो। बट डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ये वाइवा हम आपको पूछते जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि बच्चा क्या बोलता है। परफॉर्म एफएफटी ऑफ 3 4 1, सर नॉट इन सिलेबस, रॉन्ग आंसर। यू हैव टू शो सर हाउ इट कैन बी डन। हम खुद बोलते हैं ओके, दैट मींस यू नो, ओके यू आर आउट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। फाइन, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। एक ताली तो बजना चाहिए यार। सिलेबस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। Syllabus completes from my side. आज के बाद